Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, my family, my people? Today we learn how to install Oracle Apex 20.2 with database 12c release 2 in Windows 10 इंशाल्लाह. आज हम Apex 20.2 की इंस्टॉलेशन करना सीखेंगे डेटाबेस 12c रिलीज 2 के साथ. So unzip 12c release 2 database and Apex 20.2 in a folder where you want to install it. तो सबसे पहले unzip कर लीजिए database 12c release 2 को और Apex 20.2 को उस फोल्डर में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं. So it will take time. I'm going to pause it. Apex 20.2 has Oracle Apex 20.2 has unzipped. Now we are waiting for the database unzipping. Apex unzip हो चुका है, हम database की unzipping का इंतज़ार कर रहे हैं. Database unzip has also done it. Now run database setup from administrator. आप database के setup को चला दीजिए administrator के राइट से. I do not wish to receive security updates. मैं सिक्योरिटी अपडेट्स रिसीव नहीं करना चाहता, तो मैंने इसको अनचेक कर दिया. हिट नेक्स्ट बटन. क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर अ डेटाबेस. क्रिएट और कॉन्फ़िगर डेटाबेस पे चेक लगा दीजिए, लगा रहने दीजिए. नेक्स्ट का बटन दबा दीजिए. डेस्कटॉप क्लास यूज विंडोज बिल्ट इन अकाउंट. यू कैन यूज अदर ऑप्शन एज वेल. मैं यूज विंडोज बिल्ट इन अकाउंट इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप कोई दूसरा ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Assign global database name and password from your choice. Uncheck create as container database. ग्लोबल डेटाबेस नेम और पासवर्ड आप अपनी मर्जी से दे दीजिए और कंटेनर डेटाबेस के ऑप्शन को अनचेक कर दीजिए और नेक्स्ट के बटन को दबा दीजिए. ठीक है. नाउ हिट इंस्टॉल बटन. आप इंस्टॉल का बटन दबा दीजिए, ये मुकम्मल हो जाए. फिर आफ्टर कंप्लीटिंग दिस अब ये थोड़ा टाइम लेगी. So now the installation will take time. I am going to pause it. मैं इसको पॉज कर रहा हूँ. Now check private network option and uncheck public network and hit allow access button. प्राइवेट नेटवर्क के बटन को चेक कर दीजिए और पब्लिक नेटवर्क के ऑप्शन को अनचेक कर दीजिए और
प्राइवेट नेटवर्क के ऑप्शन को चेक कर दीजिए और अलाउ एक्सेस का बटन दबा दीजिए। The installation has done. Close this. इंस्टॉलेशन हो गई है, इसको क्लोज कर दीजिए। Open SQL Plus and connect sysdba। SQL Plus खोल लीजिए और उसको कनेक्ट करिए sysdba से, और उसके बाद उसके SGA मैक्सिमम साइज पता करें बाय रनिंग शो पैरामीटर SGA की कमांड चला के। Now find out its SGA maximum size by running show parameter SGA, and if it is less than 3000 and then increase it। ये 3000 M से कम है तो इसको हम इंक्रीज करेंगे ये वाली कमांड चला के by running this command, increase it by running this command। System altered हो चुका है, system has altered। Now shut down it by running shut immediate। अब shut down कर देंगे डेटाबेस को shut immediate की कमांड चला के, और थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। Now exit it, इसको एग्जिट कर दीजिए और दोबारा SQL Plus खोलें, sysdba से कनेक्ट हो। Open SQL Plus again and connect sys, and after that start database by running command startup। अब डेटाबेस को स्टार्ट कर दीजिए स्टार्टअप की कमांड चला के। अभी थोड़ा टाइम लेगी तो मैं इसको पॉज कर रहा हूँ। नाउ इट विल टेक टाइम सो आई हैव टू पॉज इट। अब हम दोबारा SGA मैक्सिमम साइज चेक करेंगे ये शो पैरामीटर SGA कमांड चला के। We will check SGA maximum size again by running show parameter SGA। Now it is okay। So now we have to install Oracle Apex। Now we will open command prompt। अब हम command prompt ओपन करेंगे और वहाँ जाएंगे जहाँ पे Apex का फोल्डर मौजूद है। Now we open command prompt and reach where Apex folder is available। Write SQL plus no log, SQL plus / no log लिखेंगे, कनेक्ट करेंगे sysdba से, कनेक्ट sysdba। अब इंस्टॉल करेंगे एपेक्स को ये वाली कमांड चला के। नाउ इंस्टॉल एपेक्स बाय रनिंग दिस कमांड apex ins sys of sys
ops temp space /i /. Now it will take time, so I have to pause it. थोड़ा time लेगा, मैं इसको pause कर रहा हूँ. Now the installation has completed. Now we will change the password by running apex ch pwd.sql. इंस्टॉलेशन हो चुकी. अब हम पासवर्ड चेंज करेंगे. यूज़र विल बी एडमिन, यूज़र एडमिन ही रहेगा. ईमेल आप अपनी मर्जी से दे दें, प्रोवाइड ईमेल फ्रॉम योर चॉइस. और पासवर्ड भी अपनी मर्जी से दे दें, एंड प्रोवाइड पासवर्ड फ्रॉम योर चॉइस. अब हम रेस्ट कन्फिग करेंगे. ये वाली कमांड चलाएंगे रेस्ट कन्फिग की. We will configure, we will run apex rest config SQL command. Provide password for both user from your choice. पासवर्ड आप अपनी मर्जी से दे दें दोनों यूज़र के लिए. अब हम एग्जीक्यूट करेंगे dbms xdb कमांड. दोबारा SQL Plus खोलें और कनेक्ट करें sysdba से. Now open SQL Plus again and connect sysdba. और ये दो कमांड चलाएंगे हम. ये एक्सपायर्ड और लॉग है तो इसको भी ओपन कर लेंगे. XDB यूज़र इज एक्सपायर्ड एंड लॉग, सो ओपन इट एज वेल. Now it is open. Run this command again.
SQL procedure successfully completed, written over here. Now we will check. Now it is creating problem. Now it's creating big problem. Continuously I am getting this error. So this is how the solution is, but it is not finishing. I am not right now able to resolve this issue. So if you can resolve this, then let me know from my side. Thank you very much. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.